Assalamu alaikum and welcome to English with SKK. Today is the new topic, the new video of active passive series. As we have completed indefinite, present indefinite passive, past indefinite passive and future indefinite passive. Today we are going to start present continuous passive. So today's video is about passive of present continuous. How we make sentences, how we convert continuous sentence into passive. So this is today's video, this is today's topic. Let's start with the formula. In present continuous passive, the formula is object, then ismr, being, being. Being in continuous we use being. Then third form by, personal pronoun and remaining part of sentence. As you know already and I have explained that when we talk about present, so we use the helping verb of present. So today we are talking about present continuous passive. So here we have the three helping verbs is and are, which we use in present sentences. Now the active sentences we have to convert into passive sentences. But remember, the topic is present continuous. Now this is not indefinite. So here we are using being. We are doing this work. We are doing this work. हम ये काम कर रहे हैं. अब इसका पैसिव कैसे बनेगा? एक दफा फिर बता दूं कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो स्टार्ट में आ जाएगा. तो वर्क जो है या जो ये वर्क है, दिस वर्क है, उसे हम स्टार्ट में ले आएंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, बी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग सेंटेंस होगा. सो वी आर डूइंग दिस वर्क इज बीइंग डन बाय अस. वी जो है वो पर्सनल प्रोनाउन में जाके अस बन जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है उसे हम स्टार्ट में ले आएंगे. नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस. वो एक नया कारोबार शुरू कर रहा है. A new business is being started by him. Again, जो ही था वो आखिर में ले जाके पर्सनल प्रोनाउन में हिम बन गया. आई मी बन जाता है, वी अस बन जाता है, तो ही हिम बन जाएगा. और जो ऑब्जेक्ट है उसे हम स्टार्ट में ले आएंगे. A new business is being started by him. Next example, she is not making biryani. She is not making biryani. वो बिरयानी नहीं बना रही है. Now we have to convert this sentence into passive voice. Biryani. This is object, but we will use in the start because now we are converting in passive voice. तो जो बिरयानी object है उसे हम start में लेंगे. बिरयानी is not being made by her. और she जो है वो पर्सनल प्रोनाउन में जाके her बन जाएगा. एक दफा फिर, बिरयानी is not being made by her. Are you teasing him? Now this is interrogative. This is a question. Are you teasing him? क्या तुम उसे तंग कर रहे हो? क्या तुम उसे छेड़ रहे हो? Is he being teased by you? He is using a mobile. A mobile is being used by him. He is not using a mobile. A mobile is being not used by him. Is he using a mobile? This is interrogative. Is a mobile being used by him? I am watching TV. TV is being watched by me. She is using computer. Computer is being used by her. I am doing my work. My work is being done by me. Bilal is calling me. I am being called by Bilal. So these are the sentences of present continuous passive. And the formula is in front of you that how we can convert active sentences into passive sentences. Remember one thing, if you are in present, so you will use present helping verb is and are. And the difference between indefinite and continuous passive is that here we are using being.
यहाँ पर हम बीइंग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो इंडेफिनेट के पैसिव थे वहां पर हमने बीइंग इस्तेमाल नहीं किया था। तो ये फर्क है कि यहाँ पर कंटिन्यूअस में बीइंग यूज हो रहा है, जबकि इनडेफिनेट में हमने बीइंग इस्तेमाल नहीं किया। आई एम वॉचिंग योर चैनल, योर चैनल इज बीइंग वॉच्ड बाय मी। ही इज सेंडिंग अ मैसेज इज बीइंग सेंट बाय हिम। और अगर नेगेटिव जुमला हो कि ही इज नॉट सेंडिंग अ मैसेज इज नॉट बीइंग सेंट बाय हिम। और अगर सवाल हो इज ही सेंडिंग अ मैसेज, तो इज अ मैसेज बीइंग सेंट बाय हिम। This is today's topic in which we studied present continuous passive. Now the next video will be about past continuous passive. तो आज की वीडियो यहीं तक थी जिसमें हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे मजीद इंफॉर्मेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। अल्लाह हाफिज।